नमस्कार, आप देख रहे हैं बीक्यू प्राइम हिंदी और ये है आईपीओ अड्डा। हमारी कंपनी आज जो आईपीओ के लिए आ रही है वो है अपडेटर सर्विसेज, जो कि फैसिलिटी मैनेजमेंट में है, बिजनेस फैसिलिटी मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट में। इनका आईपीओ जो है सितंबर 25 को खुल रहा है और 27 को बंद होगा। 280 से 300 के बीच में इसका प्राइस बैंड है। 400 करोड़ का फ्रेश इशू है और 240 करोड़ का ओएफएस है। तो टोटल आईपीओ साइज 640 करोड़ का है। और मेरे साथ आज हैं रघुनंदना तंगिराला, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है, और बालाजी स्वामीनाथन, जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी है। मिस्टर तंगिराला, नमस्कार। आपसे आज बात करने के लिए पहला सवाल, 400 करोड़ आप रेस कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए रेस कर रहे हैं और क्या उपयोग होगा उसका? या कैन बालाजी तो मैं बता देता हूँ आपको। हाँ। सो 400 के अंदर 133 हम हमारा डेट रिटायर करने के लिए यूज करेंगे, और 115 हमारा फ्यूचर वर्किंग कैपिटल के लिए ऑगमेंटेशन के लिए यूज करेंगे, और 80 करोड़ इज फॉर द ब्लाइंड फूल द फ्यूचर एक्विजिशंस, एंड जो भी बैलेंस है वो हमारा जनरल पर्पसेस में चलेगा। ओके। मिस्टर तंगिराला, ये बताइए कि आपका बिजनेस मॉडल कैसा है और कौन कौन से सेगमेंट्स हैं इस बिजनेस में? आप चाहिए तो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, अगर हिंदी में कंफर्टेबल yeah, please, thank you so much. Basically, we have two platforms. One is the integrated facilities management services. The two is the business support services. Even though both are business services, we have put it as two verticals just to have focus. Now, integrated facilities management services are maintenance of facilities, could be soft services, hard services, engineering services, support services, where we do for IT parks, airports, hospitals, metros, any facility. Now, the business support services are basically, we have four business support services. One is the sales enablement, where we generate leads and sales for B2B customers. We have mailroom management business, which is basically doing the logistics for B2B customers. Then we have the third one. What we have is the logistics for the other B2B customers. This is what we do basically. The other one which I left out was the ground handling business, where we have 21 airports where we do the airport ground handling. तो this is the business support. ये दोनों बिजनेसेस में मोस्ट मार्जिन किस में आते हैं और प्रॉफिटेबल कौन सा बिजनेस है और इनका रेवेन्यू मिक्स कैसा है? Our revenue mix is about 70% is in integrated facilities management. 30% roughly is about business support services. In terms of profitability, the IFM business, that the integrated facilities management, is about 5%. The business support services are about 15%. ओके। ये बताइए कि क्योंकि मार्जिन्स आपके बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा हैं, क्या आगे जाते हुए आपके जितने भी एक्विजिशंस होंगे वो इसी सेगमेंट में होंगे, या आप अपने सर्विसेज जो हैं इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज़ में भी इंक्रीज करेंगे थ्रू इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस? The strategy has always been to go for high margin. Strategy has always been for better growth. So our inorganic, if it is in the future, will be in the business support service space. मिस्टर तंगिराला, अगर मैं आपका देखूं, आपका रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ है लास्ट 3 साल में। इसमें काफ़ी जो है वो एक्विजिशन लेड हैं। तो अगर आप आज के डेट में मैं पूछूं आपसे कि आपका जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, जैसे 22 से 23 में 40% से ऊपर, उसमें ऑर्गेनिकली कितना ग्रो हो रहा है आपका बिजनेस और इनऑर्गेनिकली कितना ग्रो हो रहा है, और क्या आपको इनऑर्गेनिक ग्रोथ लगेगा आगे जाते हुए ताकि ये गति रहे ग्रोथ में? Let me explain. Good, you asked me this. We've been growing both the inorganic and organic at almost the same space at the same rate. About 20% is our growth if you take our historic growth in the integrated facilities management business minus the COVID 1 year. So last 5 years CAGR has been that.
The inorganic also is mid-20. So roughly we do about 35 to 40% growth. I mean, that's what we have done. So ये आगे भी रहेगा, इसी गति से आप ग्रो करेंगे? I think the next 2-3 years, this ratio will remain same because both grow almost at the same rate. ओके। मिस्टर स्वामीनाथन, ये बताइए कि मैं आपके फाइनेंशियल्स देख रहा था, 2100 करोड़ के फाइनेंशियल्स हैं आपके। जो रिपोर्टेड एबिटा हैं, मार्जिन है 4.4% है। इसमें आपके एक्विजिशन लेड कैपिटल लाइबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से एबिटा सप्रेस होता है आपका। तो उसको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे है और ये कब तक रहेगा? सो जो भी एक्विजिशन हम कर रहे हैं तो वो हम 100% पहले साल में नहीं करते, तो उसको इन 3-4 ईयर्स में ट्रांचेस में करते हैं। तो पहले साल में मेजॉरिटी ले लेते हैं, उसके बाद बैलेंस जो भी स्टेक है उसको 2 या 3 साल में लेते हैं। पर अगर आप इंडेज अकाउंटिंग के हिसाब से देखोगे, बिकॉज हमारा कमिटमेंट है उनको 100% खरीदने के लिए, तो इसलिए पूरा लायबिलिटी हमें ईयर ऑफ एक्विजिशन, जो जिस साल में हम पहला एक्विजिशन करते हैं, पहला ट्रांच, उसी साल में हमें पूरा लायबिलिटी को प्रोवाइड करना पड़ता है। और उस समय जब प्रोवाइड करते हैं तो वो बिजनेस का फ्यूचर में कैसा प्रॉफिट आएगा, बिकॉज हमारा जो सेकेंड थर्ड ट्रांचेस दैट वी पे, वो सब बेस्ड ऑन द अर्न आउट मॉडल। जो जितना प्रॉफिटेबिलिटी करते हैं उसके हिसाब से उनका भाव बनता है, इधर इट गोज अप और इट कम्स डाउन, right? So then we estimate in the first year what would be the liability, and वो liability को हमें fair value करना पड़ता है हर साल जब financial close करते हैं। तो उस समय again re-estimate करते हैं ये business कैसा कर रहा है और go forward क्या करेगा। So based on that there would be a value plus or a minus that would come in. And for us fortunately good thing is ये business जो हमने खरीदा है वो उनका initial projection से ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा better कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारा पे आउट ज्यादा हो रहा है। तो जो भी ज्यादा पे आउट आ रहा है तो उसको हम इन्वेस्टमेंट में जाके जोड़ नहीं सकते, उसको P&L में हमको प्रोविजन लेना पड़ता है। तो इसीलिए आप देख रहे हो आपका एबिटा फ्रॉम 22 से अगर आप 23 कंपेयर करोगे तो एबिटा हैज कम डाउन। इफ आई वर टू टेल यू द एडजस्टेड एबिटा, इट वाज 108 crores in FY22, now it is 145 crores in FY23, which is also there in the RHP document में दिया हुआ है। ये बताइए कि आप लगभग 130 करोड़ का उपयोग कर रहे हैं अपना डेट कम करने के लिए, बोरोइंग कम करने के लिए। टोटल डेट कितना है आज के डेट में बुक्स में, जून एंड में या मार्च एंड में कितना है, और इससे कितना डेट आपका कम हो जाएगा? मार्च एंड में डेट हमारा 174 crores के आसपास है, एंड 133 crores हम जो इश्यूज से प्रोसीड्स आएंगे उसमें से उसको क्लोज करेंगे। इससे फिर आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो तो फ्लो थ्रू हो जाएगा आपका P&L प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में उसके बाद। तो कितनी सेविंग्स की उम्मीद है इससे, कितना इंटरेस्ट कॉस्ट कम होने की उम्मीद है? Look, future numbers we may not be able to comment, but last year is debt के लिए last year में we had 14 crores of interest cost which was there, so that 14 crores might come down by about 10 crores or so. ओके, तो ये बताइए मिस्टर तंगिराला, आप लगभग 4000 से ज़्यादा मैं कहूँगा कि बिल्डिंग्स या यूनिट्स में हैं वहाँ पर एक्सपेंशन कैसे होता है? आपके कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह से आप बिल्ड करते हैं, और प्राइसिंग और कॉस्ट एस्केलेशन या इन्फ्लेशन एस्केलेशन जिसको कहते हैं, वेज एस्केलेशन जो होता है एम्प्लॉयज़ का, वो कैसे आप उसको फैक्टर इन करते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में? Yeah, good. I'll explain that. And in the IFM business, because it's more of people and wage is about 80% of my cost, we always 100% of all our people, the wage inflation, wage increase, market level, not just the minimum wage, even the market wage inflation is a pass through with the customer. That's our contract with all customers. The entire industry works this way. So that risk of wage inflation is not there because it's built into the contract. It's a pass-through. Whether it's by law, by law, when I say law, it's by the minimum wage by the government, or it's a market price. So that's the model. That's how we've been working from the day we started the business. और ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या सिंगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एवरी ईयर नेगोशिएट करने पड़ते हैं? हाँ,
About 70% is a annual contract. 30% is a long term. Long term in sense, I would say it's medium term, between 3 to 5 years. और इसमें Where even in the 3 to 5 years contract, we have the wage inflation built in. ओके, इसमें कितना रिटेंशन कर पाते हैं एम्प्लॉयज़, सॉरी एम्प्लॉयज़ का भी और क्लाइंट्स का भी, कितना क्लाइंट्स का कितना रिटेंशन हो पाता है? Okay. Employee attrition in the facilities management space is pretty high. The industry norm is about 100% attrition. We have roughly about 70% attrition in the people. And in customer, I would very proud to tell you, in a 5-year window, we have a 95% retention of customers, which has been historic all the time. So average client retention period कितना रहेगा? 95% of my clients on a 5-year window. Okay. And उसके बाद so there are some clients we are there are just to add on, there are some clients we are working for almost 20 years, 25 years we have been working with them. So that is a kind of client relationship and the client trust that we have won in the market. You should keep in mind, all these are very very let's say large Indian companies, MNCs. They have a process of discovering price, discovering quality, all that. In spite of that, we continue to be the customer because it's always, we are one up in terms of what is required, in terms of technology, in terms of efficiency, in terms of bringing optimization. All that is what happens every time. आपके पास लगभग 65,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं जो अक्रॉस 4,000 लोकेशंस में काम कर रहे हैं. इन सब के लिए इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं आपके पास? क्योंकि आपके आरएचवी में कुछ रिस्क फैक्टर्स देखे थे. एक तो था बोगस एम्प्लॉयज़ और वो सब. सो आपके इंटरनल कंट्रोल्स आपने कैसे सेटअप किए हैं उस इशू के बाद, और क्या अभी वो फुल प्रूफ हो चुका है? See, we've been in the business for about 35 years. And this is the first time which has happened in spite of all our controls, in spite of all the checks and balances we have. It does happen, and it's unfortunate. Again, I'm telling you, on the history of 35 years, is the first time. Even though it's not of material value, it's about 50 lakhs over an 8-year period. Ghost employees were paid is the first instance. So what we have done, in spite of whatever controls we have, whatever checks and balance we have right now, we have reinforced it. We have understood, done the investigation, gone to the root cause, and then we put in systems to see that doesn't happen again. Again, I would emphasize that is a very, very not matter of material, but since it is something which is a fraud, which we have taken it very serious. Mr. Swaminathan, इन एम्प्लॉयज़ में आप इनको कैसे सोशल नेट में रखते हैं? किस तरह से सोशल फैसिलिटीज़ हैं? बोनस, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड प्रोविडेंट फंड, या फिर ग्रेट्युटी, या मेडिकल इंश्योरेंस. ये सारे फैसिलिटीज़ कैसे, ये कॉस्ट कैसे आप इनकर्स करते हैं, और इनका कॉस्ट क्या इनबिल्ट होता है इनके सैलरी के अंदर या अलग से होता है? So basically multiple locations that is coming in. The way you have said correctly, we need to have a clear process, and we have a clear onboarding process where all the documents are collected. If somebody does not have a KYC, then we don't onboard them, right? And we take Aadhaar, which has been made mandated by the government, thanks to the government, and also all the regulations that are getting in place with respect to the labor force, the regularization. So for every person who's joining us, they are all direct employees of ours, and we have PF, we have ESI, bonus, and other statutories that we need to pay. And from day one, all these guys are onboarded onto the PF and ESI, and we also provide these as a comfort to our customers as well, along with our invoices, that what are the PF challans that we have paid for that respective people who are working in that particular contract, right? So वो सब भी कर रहे हैं, and the compliances are taken care. It's more as a matter of practice rather than looking into. So it has become part of our life. So that's how we have been running the company for the last 20-30 years. जो नया लेबर कोड आ रहा है, क्या उसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा आपको? क्योंकि आप काफ़ी एम्प्लॉयज़ के साथ काम करते हैं जो विच आर क्लोज़र टू मिनिमम वेजेस और मिनिमम वेजेस में बेसिकली, तो उसके वजह से क्या कोई इम्पैक्ट होगा आपको?
First thing I would say it is good that the government is coming up with this. So we are anyways already compliant, and it gives us more focus towards that compliance across the unorganized sector as well, right? So to that extent, it is a benefit for the employees as well, and at the same time, when it comes to the comes to UDAs, right? So all these amounts of statutories which are there, which are all inbuilt in the contracts that it will pass through, or we will claim it from the customer. Right, we have a transparent pricing methodology that we agree with the customer. So in that sense, I think it becomes more robust. It is more good for the country and good for the people, and we are providing so much of employment opportunity. So it is also good for us that we are able to have been part of this particular thing. मिस्टर तंगिरेला, ये इंडस्ट्री बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। यहाँ पर जब कॉस्ट रेगुलेशन होता है, वेदर आपके क्लाइंट्स के साथ एंड में हो या B2B हो या कोई भी क्लाइंट करता हो, सबसे पहला जो कॉस्ट टाइटनिंग होता है वो एडमिन एंड हाउसकीपिंग एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट में होता है। सो आप उसको कैसे नेगोशिएट करते हैं? The facilities management business is a scale business. It will always it's always had been at the 5% margins. At a gross level, we make about anywhere to 10 to 12%, but at the EBITDA level, drop to 5%. Like I told you, most of the other way inflation or thing is a pass through. So the efficiencies and optimization is where you make margin. So our scale. So these are because you can't pull price with customer. What you can pull is your own levers are your own operational efficiency and scale of operation. So the economies of scale will work. So that's the only way the business works. जेंटलमैन, आज आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका IPO जो अपडेटर सर्विस IPO 25 सितंबर को खुल रहा है। 280 से 300 के बीच में 640 करोड़ का टोटल IPO है, जिसमें 400 करोड़ का फ्रेश इशू है और 240 करोड़ का OFS है। थैंक यू वेरी मच आज BQ प्राइम हिंदी से बात करने के लिए। Thank you for having us. थैंक यू।